Okay, good evening, everybody, and hope you're all doing good. This is good evening, everybody. This video is mainly for the exam going students who are writing their exam on July 30. And I hope you're all in your peak of preparation. I'm Dr. Khalil, and in this last 45 days, what should be your mindset and how you should tackle these 45 days so that you have your optimum output and optimum result for your upcoming FMG. Let's discuss few things, relevant points on that. First of all, please remember to push yourself because no one else is going to do it for you. So you have to be really, positive, really focused on your goals. You have worked so hard to come so close. तो अभी इसको जाने नहीं देना है, राइट? इतनी मेहनत करके करे हो आप लोग, राइट? तो इतना सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, तो लास्ट 45 डेज इज अ डिसेंट टाइम. इवन नाउ यू हैव गॉट एन एक्सटेंडेड एग्जाम, आपको काफ़ी टाइम मिला है कंपेरेटिवली. एंड इवन लास्ट टाइम व्हेन द एग्जाम वाज पोस्टपोन्ड, we had very good results from the students, around 35%, right, pass percentage. So you should expect a similar results and similar pass percentage for your exams also. So before that, can you see my screen now? All of you are there? Yeah. Right now, just let us start by understanding a few important things. Answer me these questions. Is your preparation, I'm looking at your chat, so you can communicate with me during your live discussion. Is your preparation better than before in this phase of your exam? Is your preparation better? Just answer me yes or no so that I can understand, right? Is it going in the right track? Just see your chat also. Is yes or no? What do you think? Is your preparation up to the mark? Yes, so better. Okay, so many people are answering is little better. Okay, next. Have you completed 10 plus subjects at this stage? So this is for the people who are writing the July 30th exam. You tell me, have you completed at least 10 plus subjects, 10 to 12 subjects nicely till this stage? Yes, so your answer is yes for this. Then, are you feeling better prepared than your previous attempt? If somebody is writing it for the second time, do you feel that you understand the MCQs better? Do you feel you're much more knowledgeable than the previous attempts, right? And if your answer is also yes, bahut zyada, yes, right? So much better. So this already means you are in the right frame of things, right? You are going to be the future successful candidates. If all your answers for this is already yes, that means there is no need to panic unnecessarily, no need to get scared unnecessarily. You have improved yourself. You're already, on the better side of the story. So you should just see that you're focused and calm for the next few days, right? Now, in the upcoming few days, how do we strategize this 45 days? So once I understand that many of you are answering it yes, right? Many of you are saying that based on some, whatever source it is, okay, whether you have studied the full notes, whether you have done any kind of rapid revisions or anything, so as long as your subjects are, you're feeling comfortable with your subjects, and the best way to analyze your preparation is on track or not is do your previous paper, right? Do your previous paper. You will understand how well prepared you are and stuff. So if you are scoring good scores in your previous papers, right? So you mean if you're understanding the PYQs easily, all the PYQs you're able to solve much confidently. That means your preparation is going on track, you're on plan with your preparation, and you should do good. Now, coming to the next 45 days, it's important to stay disciplined. This is very important. अब इस टाइम पे unnecessary thoughts ला रहे हैं आप, right? Worry हो रहे हो, anxious हो रहे हो, too much of nervousness at this point of time, too much of overthinking, overanalysis at this time, and having a nervous outlook towards it is not going to help you. It is important to stay disciplined. You have worked so hard to come this stage where your all answers are yes. That means you have worked so hard for this stage.
अब यहाँ आके खराब नहीं करना है, राइट? सो स्टे डिसिप्लिन थ्रू इट, यू विल हैव अ सक्सेसफुल रिजल्ट. Now let's look at the practical approach. How do we, go through these 45 days? First, we have 45 days from our exam. I would want you to divide it into 19 days. जो first 19 days है, अभी के जो 19 days है, go with doing all subject wise, each day subject wise. You can use half day for short subject or 1.5 day or 2 days for a major subject, but subject wise, if you can complete one subject per day, you still have 19 days where you can thoroughly revise. Do you think हो जाएगा? अगर एक दिन अगर आप बैठेंगे और पूरा रिवाइज करेंगे एक सब्जेक्ट इस स्टेज पे, कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, वन डे यू आर सिटिंग विद ईएनटी, कैन यू रिवाइज ईएनटी कंप्लीटली इन वन डे? Can you revise your ophthalmology completely in one day, focused one day time, right? You're going through, lot of test and discussions are happening, like you are going through the questions and stuff, and you have done your revisions also. So at this stage also, if you can sit calmly without hurrying and without, panicking, if you give one day per subject, short subjects may need half day or maybe, not more than 5 to 6 hours, but a long subject may need some time. But will you be able to finish one subject per day and complete all the 19 subjects in the first 19 days? Do you think it is possible? सर्जरी मेडिसिन, ओके, आई अंडरस्टैंड. चलो हम लोग एक वही बोलो ना, शॉर्ट सब्जेक्ट आपका आधा दिन में भी हो गया, तो फिर आप उस टाइम को यूज कर सकते हैं. और चलो विल गिव प्लस और माइनस 5 days इफ यू वांटिंग टू ऐड your clinical subjects, gives a little more time for your clinical subjects. This is still possible to do. So you will have at least 24-25 days. चलो I'll give you a 25 day time. Complete होगा 25 days में? 25 days, can you complete all the subjects again? Do you think this is possible in 25 days? 25 days में कर लेंगे अपन? सर्जरी और मेडिसिन के साथ हो जाएगा, राइट? सो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आई एम गिविंग यू एम्पल टाइम, राइट? के दो दिन भी अगर आप दे रहे हो एक एक सब्जेक्ट का, पीसफुली अगर रिवाइज भी करना है तो भी आपको कंप्लीट हो जाएगा. मेजर सब्जेक्ट्स को आप 2 days भी दे रहे हो, 2.5 days भी दे रहे हो, आराम से आपके मेडिसिन, ओबीजी, सर्जरी को अगर आपने डिटेल टाइम भी दिया है, यू विल स्टिल बी एबल टू कंप्लीट ऑल योर 19 सब्जेक्ट्स विद इन दिस टाइम फ्रेम ऑफ 25 days. वो भी रिविजन करना है, ऐसा नहीं है कि भी नया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो. देखिए, you will feel that you don't remember, but your revision time will be faster. This is going to happen. So don't panic because you feel that you don't remember. Not feeling that not remembering is normal. To feel that you have forgotten is normal. The benefit that will happen is if you start with your notes, start revising them, you will revise them faster. आपको अगर जो चीज लास्ट टाइम 4 days 5 days लगा था, इस टाइम पे 2 days और 1 day लगेगा. So that is the difference that will happen. So have trust in that process that you have gone through. Have the faith that all the effort that you have done, all the MCQs that you have solved, it is not gone evaporated. लगेगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है. आपको रिवीजन फास्टर होते जाएगा. जो चीज आपको 2 दिन लगे, अभी 1 दिन लगेगा. जो आपने प्रीवियस रिवीजन में 1 day किया था, अभी हाफ डे लगेगा. But that is going to happen. Okay, trust me on that. It will just be faster. Okay. Next, then we have a ample 10 days time left again, even if we complete 25 days ko aaram se. So there is no point leaving a subject. Even at this stage, there is no point leaving a subject. Even if you have given 2 days, 2.5 days, you have still time to complete all the subjects. अब ये कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट में आप डिसाइड करो कि नोट्स के साथ क्या करना है और आपके रेट्रोग्रेड फैशन में क्या करना है. नोट्स, द टॉपिक्स दैट यू हैव डन वेल, आपने क्लासेस अटेंड किए, आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, आपने रिवाइज भी किया उसका, राइट? टेस्ट एंड डिस्कशंस अटेंड किया है, एंड यू फील कि यू कैन हैंडल दैट नोट्स. अगर आपने लगा है कि नोट्स हैंडल कर पाओगे, आपने रिवीजन किया है उस नोट्स पे, स्टिक टू योर नोट्स. डोंट चेंज सडनली. नोट्स छोड़ के फिर नया टॉपिक मत करो, क्योंकि इस पर मेहनत कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? जिस चीज़ को आपने नोट्स पहले से अच्छे से कर चुके हैं, यू फील कॉन्फिडेंटली कि मैं रिवाइज कर लूंगा अगर मैं बैठूंगा सुबह से शाम तक, तो प्लीज स्टिक टू योर क्लास नोट्स. द काइंड ऑफ सबकॉन्शियस नॉलेज दैट द नोट्स विल गिव यू विल हेल्प यू सॉल्व लॉट ऑफ इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस इन द एग्जाम. आपको लगेगा कि भाई सिर्फ PYQs करेंगे, चले जाएंगे, रिविजन करेंगे, नहीं होगा. जो चीज़ आपने मेहनत करके किया है उसको थोड़ा सा टाइम दे के कर लो, सब्सटैंशिएट कर लो, काम आएगा एग्जाम के दिन. ओके, सो इट विल हेल्प यू सॉल्व लॉट ऑफ फाइन क्वेश्चंस दैट विल कम ऑन द एग्जामिनेशन. और रेट्रोग्रेड किसको करते हैं? इसमें रेट्रोग्रेड में जो भी सब्जेक्ट्स आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, अभी क्या है, टाइम नहीं है कि भी पूरा क्लास करेंगे, वीडियोस करेंगे, अभी जाके पूरा रिवाइज करेंगे, ये नहीं हो पाएगा. अभी आपको देख लेना है कि अभी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है. जो आपके स्ट्रेंथ सब्जेक्ट्स हैं
उनको हम और स्ट्रेंथन करेंगे, and this should be including your major subjects. I feel lot of importance should be given to your major subjects. Major subjects को आप properly करो, जो high yielding subjects है, your OBG हो गया, your optal हो गया, your ENT हो गया, जहां से आपको straight forward questions आते हैं, जो आपको लगता है कि notes revise भी हो जाएंगे और score भी अच्छा कर लोगे, right? Give importance to notes. Don't change your source. आपने जिस पे काम किया है, जिस पे मेहनत किया है, revise करो, हो जाएगा. जो वीक सब्जेक्ट्स है और सब्जेक्ट्स यू हैव नॉट डन वेल, नॉट अटेंडेड वेल, सब्जेक्ट्स नॉट डन वेल, राइट, जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है, उसके लिए अभी आप दिमाग खराब मत करो. यू डोंट नीड टू डू एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू गेट 300 इन द एग्जामिनेशन, राइट. अगर आपने उसमें रिवाइज करने के लिए भी अगर कंसाइज पैटर्न बना लिया, यू विल बी एबल टू डू देम रेट्रोग्रेड. रेट्रोग्रेड मतलब क्या है? आई फील एक दिन में अगर आप बैठोगे, सिंसियरली सोचो आप, भाई कोई भी आपकी एक इवन यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ PYQ बुक और एनी काइंड ऑफ MCQ बुक दैट यू आर सॉल्विंग, अगर आप देखोगे कितने क्वेश्चंस होंगे फॉर योर वीक सब्जेक्ट्स में भी 400 क्वेश्चन. कैन वी डू 400 to 500 क्वेश्चंस पर डे? इज इट पॉसिबल? अगर मुझे सब्जेक्ट भी पता नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है सब्जेक्ट, अगर मैं टॉपिक वाइज MCQs कर रहा हूँ एक सब्जेक्ट में से, मेरे को 400 से 500, फॉर एग्जांपल आई टेक मे बी, मैंने रेडियो कभी नहीं किया है, राइट, और मैं रेडियो का MCQs निकाल रहा हूँ, MCQ बुक में निकाल के चैप्टर वाइज MCQs देख रहा हूँ, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, 400 से 500 से ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं रहेंगे, राइट. इससे ज्यादा तो नहीं रहेंगे. हो पाएगा 400 से 500 क्वेश्चन दिन भर अगर आप बैठोगे? होगा, नहीं होगा? पॉसिबल और नॉट? pretty much doable, right? pretty much doable. तो ऐसी डिफिकल्टी नहीं होगी कि भी नहीं होगा या नहीं कर पाएंगे. It is pretty much possible that you can complete all the 19 subjects even in this time, even revising your notes, not leaving your hard work that you have done, और जो बिल्कुल भी आप नहीं करे उसको भी आप एक कॉन्फिडेंट लेवल पे कर सकते हो. जस्ट डोंट डू PYQs, नॉट ओनली PYQs. आई डोंट प्रिफर स्टूडेंट्स ओनली डूइंग बिकॉज उतना ही नहीं होगा ना, आपके पास एक दिन का टाइम है. सिर्फ PYQs अगर मैं बैठ के करूंगा, 4 पेपर्स का, 5 पेपर्स का करूंगा, आई मे नॉट गेट दैट नॉलेज दैट इज नीडेड ऑन द डे ऑफ एग्जाम. अगर मैं टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करूंगा, रेट्रोग्रेड ही तो कर रहा हूँ ऑलरेडी, सब्जेक्ट में रेट्रोग्रेड में उसमें रख रहा हूँ, तो उसमें मैं और कंसाइज करूंगा और सिर्फ PYQs करूंगा, तो इट विल नॉट बी दैट सफिशिएंट. I would want you to take up MCQs on a retrograde fashion because you have time now. It is not a time of panic now. PYQs हम लास्ट लेटर पार्ट्स में करेंगे. अभी तो हम करेंगे कि भी जितना हो सके हम उस सब्जेक्ट को कंप्लीशन तक, एटलीस्ट रेट्रोग्रेड फैशन में एक कंप्लीशन आएगा कि भी हाँ चलो हमने ये चैप्टर किया. फॉर एग्जांपल आपने अनेस्थीसिया नहीं किया है, कभी नहीं पढ़ा है, आप अनेस्थीसिया के MCQs निकाल रहे हो, एक बार IV एनेस्थेटिक्स के MCQ सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा एक बार देख लिया, इनहेलेशनल एजेंट्स, कर्नल मदर रिलैक्सेंट्स, तो आपने एक बार देख लेंगे और क्वेश्चंस वही रैंडम, वही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे. इन सब्जेक्ट्स में से यू विल नॉट गेट लॉट ऑफ डिफरेंट और वेरिड क्वेश्चंस, यू विल गेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक. और एक बार आपने वो सारे टॉपिक वाइज MCQs देख लिए, आपका रिकॉल बना रहेगा, तो ऑन द डे ऑफ एग्जाम व्हेन यू सी अ क्वेश्चन यू विल गेट दोस क्वेश्चंस राइट ऑन द एग्जाम. तो ट्राई टू डू दिस रेट्रोग्रेड फैशन. तो इस तरह से आप अपने 19 सब्जेक्ट्स अभी भी पूरा आराम से कर सकते हो विथ योर patience, without wandering here and there. If you keep your heart and soul into it, you can still complete all your things. Next, then at the end of these 25 days, or even if you're in between, right, if you've already started giving your GTs, well and good, but all of you, I would want you to give a grand test, right, after you complete this cycle of 19 days, 19 subjects. अगर एक बार आपका ये 19 subjects का cycle हो गया, right, if you feel that you have done this, please give a GT test, and not to analyze, right, not to के भी worry too much on के भी क्या हुआ, कैसा होगा एग्जाम में, ऐसा नहीं. GTs are not going to reflect exactly on your the day of your exam. GTs will help you get yourself trained कि आपको बैठ के सारे 300 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए जो माइंड की कैपेबिलिटी बननी चाहिए, वो आपको ट्रेनिंग होगी. तो गिव विद दैट माइंडसेट. और GTs में जो मिस्टेक्स जाते हैं, राइट, डोंट गेट अपसेट अबाउट इट. लोग, आई हैव सीन कि GTs में कम स्कोर आते हैं, बस वंस GTs में स्कोर कम आ गया, GTs देना ही नहीं है. ऐसा कैसा होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस. आपने क्लासेस में भी देखा होगा, first few days it is very difficult to sit in the class for 7 hours, 8 hours and listen to the faculties, write your notes and stuff. But as you go through the process, it becomes easier. You are writing notes for long time, you're listening to the classes, you're engaging, you're studying in the library for so much time. ये इनिशियल में डिफिकल्ट होगा, लेकिन लेटर पार्ट में नहीं होगा. लेकिन अगर आप बैठेंगे ही नहीं, अगर आप स्टार्टिंग से आदत ही नहीं डालेंगे, तो ऑब्वियसली वो हमेशा नया रहेगा, हमेशा डिफिकल्ट रहेगा. सेम थिंग विद द GTs. Initially, the scores will be less. Initially, it will be painful for you to sit through the entire paper. But if you keep doing it, regularly, it becomes familiar. And आपके exam day में you're trained, your body, your mind is trained to handle that whole day. So please give your GTs for the training part.
right? It is a training process, not a judging process. It's a learning process, not a judging process. Please go through the training of going through GTs, and जो भी mistakes करते हो, right, try to mark them up and see that you revise them. और सारे जो retrograde आप subjects कर रहे हो, या फिर MCQ solve कर रहे हो, MCQ सॉल्विंग कर रहे हो, राइट, इवन आपका सब्जेक्ट वाइज रिवाइज किया, आपने MCQ सॉल्व किया, MCQs तो सारे सॉल्व करना है, नोट्स रिवाइज करके भी MCQ सॉल्व करना है, रेट्रोग्रेड भी MCQ सॉल्व कर रहे हो. आफ्टर डूइंग MCQs, while doing MCQs, mark the mistakes that you're doing. Mark the mistake, just underline के भी कौन सा कर रहे हो. And it is still possible to do 400 to 300 MCQs per day, आराम से होंगे, right? If you are sincere enough, even notes revise करके आप बैठ के MCQ solve कर सकते हो. और जो mistakes कर रहे हो, keep marking them, because last में वही mistakes देख पाएंगे, आप सारे फिर से MCQs नहीं देख पाओगे. तो just mark those MCQs that you are doing wrong in this attempt. Then after you are done with this cycle, then the next 10 days, it's important. The next 10 days में अब आपको जितने सारे MCQs के PYQs करना है, लाइक सारे PYQs करना है. You have your previous papers of that's FMG के exam के, like last 5 years के papers, and as many as you can go, because some questions are exactly the same copy. So you need to get to understand what are the topics that the examiner is testing, what are the question format that is there. PYQs पे ज़्यादा ध्यान दो, image based questions कर लो इसी time पे, right? And also try to do all the Arise Insight has all these previous year papers recall that is there, and you can go through that. You can go through for the PYQs के से exact exam के recall questions जो बच्चों ने exam लिख के बताया था, तो we have compiled it so that it gets familiar for you. You can use those PYQs in the Arise Insight. IBQs, image based questions कर लीजिए. You have a lot of questions coming on image based, especially dermatology के, radiology के. Just see the images through this thing. Then इसमें 10 days में try to do a revision of high yield subjects again. Don't leave high yield subjects towards the last 10 days. वो टाइम बस नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे अगर आपने फिर से OBG, PSM, right, आपका Pharma micro was tested heavily this last paper, right? So please do not ignore that, especially micro also, right? At least आपने पढ़ा भी नहीं है तो PYQs करके जाना, retrograde करके जाना, रिविजन करके जाना उस चीज का वापस. तो इस 10 days में आपके हाई yield सब्जेक्ट्स का फिर से एक बार रिवीजन का प्लान करो, along with your PYQs, IBQs and obviously GTs. every week आप तो चलते रहेगा throughout the preparation, right? So every week आप एक GT देख सकते हो and try different places, right? So you can try from different sources just to understand how you're scoring and never get disappointed. I know many students जो बोले कि सर हमको GT में अच्छा स्कोर नहीं आया, we were scoring 45%, 50%, but they came out successful on the day of exam. So have that faith, go through that process. करेंगे नहीं, नेट प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीधा जाके फाइनल खेलोगे बोल तो नहीं होगा. आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहना है. You will feel comfortable on the day of exam. Now then, and आप लोग को जो भी queries आ रहे हैं, right, you can always share in. I'll take up all your queries in between also, right? FMG और देखिए जो PYQs आप कर रहे हो, जो आप when you're solving your PYQs, I would want you to go for FMG last 5 years, NEET PG last 5 years, दोनों के मिनिमम 5 years करना है. एंड FMG थोड़ा एक्सटेंसिव भी कर सकते हो आप, ओके, बिकॉज ये जल्दी जल्दी भी होते रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन ही रहेंगे, आपको इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा. इफ पॉसिबल यू कैन एक्सटेंड टिल 2017 इफ पॉसिबल, राइट. 2017 से अगर आप करना चाह रहे हो तो यू कैन एक्सटेंड इफ यू हैव टाइम. अगर टाइम नहीं मिल रहा है आपको तो एटलीस्ट इन दोनों के 5 years के पेपर्स देखना. नीट पीजी इज ऑल्सो वेरी रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम नीट पीजी गेट ओवरलैप्ड इन FMG के, स्पेशली द लेटेस्ट नीट पीजी क्वेश्चन लास्ट 2 to 3 years. अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 2 to 3 years के नीट पीजी तो देखना ही देखना है. ओके, दैट विल हेल्प यू गेट सिमिलर क्वेश्चंस ऑन द डे ऑफ एग्जाम. तो वो बहुत एक 10 क्वेश्चन भी अगर आपको जो आपके मिस्टेक्स होने वाले थे, अगर वो सही हो गए, राइट, आपके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे. एंड ऑल द गुड स्टूडेंट्स दैट आर देयर, राइट, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, who have gone through this process, who are doing good in the GTs, who are scoring more than 50%, जिसने टेस्ट एंड डिस्कशंस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, राइट. वन एडवाइस फॉर यू, if you're already on that mode that where you're scoring good in the grand test, in the test and discussions, please improve your target now. Please remember, in this exam 149 equals to 0. I keep telling this again and again, but 150 is not equal to 300.
तो सर मेरे को क्या करना है, मेरे को 150 भी आ गया चल जाएगा, 160 भी आ गया चल जाएगा, 170 आ जाए चल जाएगा? नो. If you are a good student, especially, your target should not be just about going for 150, because you have got time now, you have enough time to prepare, right? आप थोड़ा सा नीट पीजी के क्वेश्चंस भी देखो, थोड़ा सा अपना अपना गेम थोड़ा और अपलिफ्ट करो. The reason I'm saying this is your internship is on merit list. अभी क्या हो जाएगा कि आपको अपने सिटी में काम करना है, अपने हॉस्पिटल के, अपने घर के पास, अपने घर पे रह के जाके इंटर्नशिप करना है. You want in a government setting, you want in a good city, you want to do internship. That is based on merit list. I know many students, okay, from different places. Now they're getting chance to do internship in Delhi, right? Our own students who got more than 200 plus are getting access to, getting trained under central institutes, getting trained under, in Delhi and other places. So वो एक skill अच्छा रहेगा. Okay, once you have that, kind of exposure, or the kind of clinical skill that you can develop there in government settings and in good hospitals, right? That will be there with you throughout life. That is one thing. And I hope all of you know that INS set requires 165 plus. So if you are a good student, your score, your should not be target should not be just 150. So try to be more aggressive in your approach. Try to see that you can come as close to 165 plus, right? So that you get your access to INS set exams in future, or your internship is also at a good place that it can happen, right? And try to get a good score. It will give you a lot of confidence going into your upcoming postgraduate exams or next exams, that you will perform much better. वो confidence भी आएगा, वो आगे लेके जाएगा आपको, right? So always try to aim better and give your 100%, but don't make yourself very nervous about it. You are scoring well, be calm, be composed to achieve that. At the same time, do not panic unnecessarily or do not burden yourself, right? But goal हमेशा अच्छा रखो, अच्छा भी होगा. Next, then after doing this, the last 10 days, hello Amir, the last 10 days, now these are crucial days, guys. I mean, these days are make and break days. I would say the last 10 days are the make and break. Last 10 days of your FMG preparation. Whether you are liking or not, please change your biological clock. This is high time. I have seen, आप लोग समझते नहीं हो, लेकिन you all must be, some people who are repeating it, you all must be knowing it. Morning 5 बजे उठ के जाना पड़ेगा hospital, to your centers, to your examination centers. It is going to be difficult if you are a night person. Night person, if you are comfortable studying at night during your preparation, it is all okay. But close to your exam, you want to be active in the day. It is not possible that suddenly you will wake up on the day of exam and you will do a good exam. Try to at least cut down. May not be 100%. अगर आप रात के 2-3 बजे सोने वाले हो, तो at least try to sleep by 12 to 1, so that you have little fresh energy in the morning, right? So and your biological clock sets according to that. And do not skip your sleep. This getting results is not by missing out on sleep. ये याद रखो आप. हम करते क्या है, मेरे को अभी एग्जाम आ गया, मेरे को अभी ज्यादा पढ़ना है, रात के 2 बजे तक भी पढ़ रहे थे, नींद भी आ रही है तो पढ़ रहे, राइट? सुबह भी जल्दी उठ के पढ़ने की कोशिश कर रहे. इट डजंट वर्क लाइक दैट. आई हैव नॉट सीन एनीबडी डूइंग मच गुड जस्ट बाय compromising on their sleep. If you are awake in the day, you don't have to be awake in the night. If you are awake in the day, you don't have to be awake in the night. दिन भर में जो आपकी एनर्जी होती है, if you use your energy wisely, if you do not spoil your energy on the mobile, on chit chatting, on traveling here and there for food and stuff, if you consume your energy well, you do not spoil your energy and use that energy wisely to focus only on your academic, you don't have to compromise on your sleep. हम करते क्या हैं, जब हमारे पास energy है, when we are fresh, when we can give in ourselves, we are chit chatting, we are scrolling through, we are relaxing in that time. But once we are in the late in the night, we realize the whole day is getting over. Now we panic. Now we want to study कि अभी कितना पढ़ना है, नींद भी आ रही है, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो. It doesn't work like that. Please have a disciplined schedule, disciplined timetable, especially with your sleep. It is important. Maintaining a proper sleep will help you get good results, not by compromising on sleep, right? So keep this in mind. Next, and other important thing that we have is not just that, also in the last 2 to 3 days, have all your volatile topics, list of volatile topics आप बना के रखो during your preparation of these days. Whatever you want to revise in the last 2 to 3 days, okay, volatile list आप बनाते रहो, right? This can include your
know, SPMK data that you have to learn, or you can have your, forensic IPC sections and all of that things, or you have some, biochemistry के enzymes का अगर आपको list याद करना है, right? Anything that you have, any volatile topics that you know, right? Whichever you find it difficult, you can keep all of this plan in your table कि भाई हाँ मेरे को ये last 2-3 days पहले देखना है, and in the last 2 to 3 days also again a revision of along with this volatile data तो ये एक बार देख लेंगे तो हो जाएगा, but ज़्यादा time you try to give it again of your high yield subjects again. You want to do OBG, you want to do all the opthal, ENT, right? If you can do bit of systems of medicine, right? And even your short subjects ये काफी high yield होते हैं, right? At least the PYQs of short subjects, just to give you that feeling that you are better at this point of time also. इसमें आप जितना कर सकते हो ऑलरेडी आपने अभी किया है, इसमें से जो भी आपको लगता है कि भाई एक बार रिवाइज करने से आपको बेनिफिट होता है, whichever your subject you want to brush yourself, not that you can complete all 19 in 2 to 3 days time, but whatever you feel that you need to give some time on that time, right? List out those subjects कि भाई मेरे को ये 2 to 3 days में करना है फिर से, right? And give half day for that and try to complete as many as possible so that it is fresh on the day of exam. And last, on the day before the exam, right? It is important how you plan your last couple of days, how you plan your exam center, how you plan your travel, how you plan your breakfast. Okay, the last day session. Okay, we'll plan for the last days, last 1 week of your exam separately. But for now, I think keep these important criteria in your mind. कि मेरे को अभी first 45 days बचे हैं, मेरे को 25, 10 और 10 days में पैक ऑन करना है. 25 डेज में मेरे को हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, इवन नोट्स रिवाइज कर सकता हूं, और जहां पे मुझे लगता है कि नोट्स नहीं पकड़ सकता हूं इस टाइम पे तो मैं उसको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करूंगा, नॉट जस्ट पीवाईक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करूंगा, मार्क करूंगा जो एमसीक्यूज मेरे गलत जा रहे हैं तो उसी को रिवाइज करने के लिए आसानी होगी. नेक्स्ट 10 डेज में सारे पीवाईक्यूज, एफएमजी के लास्ट 5 ईयर्स, नीट पीजी के लास्ट 5 ईयर्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, या फिर आपके जो भी हाई यील्ड सब्जेक्ट्स का एक रिवीजन फिर से करना है, आई विल डू दैट. Next 10 days में see that your biological clock is on track, your volatile topics are listed out and you're working on the volatile topics. See that your high yield subjects are on track. And then the last couple of days before exam आपको कैसा करना है, we'll again discuss all of that in the next video. Then anything else you have from your side, please ask me कि क्या-क्या आपके doubts हैं, queries हैं. I'll take this up and we'll see what all things you have to do for your exam. I hope you're all form fill up कर लिया आप लोग, सब apply कर लिया आप लोग, right? Otherwise 20th June is upcoming. Try to submit your forms by then, and I hope you have an idea about the timings also. आपको exam center को by 7:30 जाके report करना है. So important that you understand these timings also. Remember those timings. Remember the duration of the exams, right? So see that you are on track with the timetable that you have for your exams. Then you will always remember, you'll always get this opportunity to succeed if you are in the right thought process, right mindset. लेकिन अगर आप ऑलरेडी गिव अप कर रहे हो, अपने माइंड में भी गिव अप कर रहे हो, राइट, देन यू विल एक्ट एज इफ यू हैव गिवन अप. सो प्लीज रिमेंबर, इमेजिन सक्सेस इन योर माइंड. Imagine that you are passing the exam with good scores, with very good internship, close to your city, very good scores. People had scored more than 200. How many students had scored more than 200 in the last exam? And the exam has become little easier. I hope before next gets implemented, they will give you a similar exam, a easier exam. 35% pass percentage is a doable exam. And if you see the last paper, you will yourself say, sir, बहुत easy paper था, थोड़ी भी तैयारी करेंगे तो हो जाएगा. तो it is not very difficult paper, right? So and यही होगा. तो पहले अपने दिमाग में सोचो कि भाई आसान. Don't get panicked with the rare questions that you see in GT और randomly इधर-उधर से आपने देखा है और यहाँ से करा है, वहाँ से करा है. It doesn't work like that. And avoid doing too much of questions on telegrams, WhatsApps and stuff. Okay, ये सारे चीजें नहीं होते. There are a lot of good books available for your PYQs, lot of good books available for solving the questions. Don't go for rare questions, don't go for lengthy questions. ऐसा पूछा नहीं गया है अभी this time point of time those questions have not asked. The best way to assess is last year का पेपर देखो आप.
सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो जो पूछा जा रहा है उस पर तो प्रैक्टिस करो आप लोग, रादर देन वरिंग एंड सॉल्विंग एंड कि भी इसमें से ये क्वेश्चन आ गया तो कैसा, सारा सारा बुरा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जामिनर को भी पता है कि भी हमको बच्चों को इतना 150 मार्क्स लाने वाला पेपर रखना है, सो एवरीबडी विल हैव दोज 150 हिडन इन दैट 300। वो स्टार्टिंग में नहीं होंगे, बीच में होंगे, एग्जाम में लास्ट में होंगे, या कहीं ना कहीं पे हिडन होंगे, बट यू विल हैव योर 150 इन योर पेपर, right? There are some questions in the beginning that will be difficult, some questions in the middle, but that will not decide your result. Those 150 you have to easily pick up. Then there will be something that you have to apply and you have to think over. And आप इतनी practice करे हो, इतने questions solve करे हो throughout this 6 months, right? And you have got enough time even now to complete solve questions. Even if you're doing 400 questions, you all of you said that you can solve 400 questions in this days, right? So you still can do 1600 questions to 3000 questions when you do the GTs and stuff. इतने सारे questions के और questions वही आते हैं, टॉपिक्स वही आते हैं, तो अलग अलग क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चन नहीं है, पेलाग्रा ही आएगा, तो आप अननेसेसरी पैनिक मत करो, राइट? थोड़े नए क्वेश्चंस आएंगे, दैट डोंट डिसाइड। टॉपर को भी 250 प्लस से ज्यादा नहीं आते, क्योंकि वो 50 क्वेश्चन मैटर ही नहीं करते। आप लोग क्या करते हो कि वही 50 क्वेश्चन को देख के ये आ गया तो कैसा होगा मेरा एग्जाम, ये आ गया तो कैसा परेशान रहेंगे, तो यू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दोज 50 क्वेश्चन दैट यू आर द एग्जामिनर डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू आंसर, एंड यू स्पॉइल योर मूड, यू स्पॉइल योर प्रिपरेशन थिंकिंग ऑफ वरिंग अबाउट दोज 50 क्वेश्चन। आपके हाथ में जो क्वेश्चन है, जो डूएबल क्वेश्चन है, उनको खराब नहीं करना है, राइट? सो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड डू। प्लीज अभी लास्ट 45 days देयर आर 2 things that I want you to follow. लास्ट 45 days एक दो चीजें आप करो। बिफोर स्लीप, every night before sleep, analyze your day. I have seen people just sleeping without any plan of your day in the morning, any plan of the day in next day. First analyze your day कि कहाँ क्या क्या आपने किया, what you did, what you missed, कहाँ पे आपने डिविएट किया अपने टारगेट से, अपने गोल से, कहाँ पे आपने अवॉइड, क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए थी, राइट? तो आप एक एनालाइज करो कि मेरे को ये टाइम पे ज्यादा घर पे बात नहीं करना था, मेरे को इतना ज्यादा टाइम मेरे को फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं करना था, या फिर मुझे यहाँ जाना नहीं था, वहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आप स्क्वीज इन करो। टॉक टू योर फैमिली। इट इज नॉट दैट यू विल कंप्लीटली अवॉइड, मैं रिजल्ट होने के बाद ही कॉल करूंगा, मैं रिजल्ट, ये सब चीजें अननेसेसरी प्रेशर अपने आप पे आप डालोगे। नॉर्मल रहो, टेक इट इन अ वेरी नॉर्मल अप्रोच, राइट? हम बात भी करते रहेंगे, कंफर्टेबल भी रहेंगे, राइट? विल बी हैविंग अ स्मूथ प्रिपरेशन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अननेसेसरी इमेजिनरी प्रेशर्स। आप पास करो नहीं करो, पेरेंट्स ही रहेंगे, राइट? आप उनसे दूर जाने की, अपने फैमिली से दूर रख के काम करने की जरूरत नहीं है। कि स्टे कनेक्टेड, इट विल कीप यू एट ईज, इट विल कीप यू एट पीस ऑफ माइंड, इट विल कीप यू इन अ क्लैरिटी ऑफ थॉट to approach the exam, rather than becoming very isolated towards your last 45 days. So first, before your sleep, आपने उस दिन को कैसा गुजारा है, कहाँ कहाँ पे आपके पॉजिटिव्स थे, कहाँ पे आपने अच्छा एनर्जी दिया, कहाँ पे आपने गलती की है, कैसा उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या रिवीजन किया, एंड रिवाइज द सेम डे, रिवाइज whatever you have done, because the crucial 45 days. If you just keep on studying without revising, यानी अगर आप मॉर्निंग टू इवनिंग का शेड्यूल बना रहे हो, इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम 9 AM to 12 PM, complete your studies till 9 to 9, 9 से 12, revise whatever you have done from 9 to 9. So see that you revise the same day, so you have more recall, more memory of it, rather than just studying throughout the subject. Then plan the next day also. Before you wake up, you should have a plan. You should know what time you are waking up, what is the subject that you are doing, what topics that you are trying to cover, और उसको कैसे लेके जा रहे हो, कब मॉर्निंग में क्या कर रहे हो, इवनिंग में क्या कर रहे हो, ये ऑर्गेनाइज्ड और प्लान रखना चाहिए। तो अगर ये दो चीजें अगर आप कर रहे हो कि बिफोर यू स्लीप यू आर रिवाइजिंग वॉट एवर यू हैव डन द डे, यू आर लुकिंग एट इंट्रोस्पेक्टिंग योर डे कि कहाँ पे आपके पॉजिटिव्स थे, कहाँ पे नेगेटिव थे, एंड देन ऑल्सो नेक्स्ट डे व्हेन यू वेक अप यू हैव अ प्लान इन योर हैंड कि मेरे को कब उठना है, कब लाइब्रेरी पहुंचना है, कब क्लासेस करना है, राइट? यू हैव एवरीथिंग स्ट्रीमलाइन, इट विल बी ईजियर एंड इट विल बी स्मूथ जर्नी, एंड आपके लास्ट 45 डेज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड टारगेटेड अप्रोच में जाएंगे, राइट? सो कीप फॉलो दिस अप। नेक्स्ट, not able to remember points immediately while solving questions, that the only thing is more revisions. That solution will come with revising more times. You still have 45 days, you will still do 2 to 3 revisions of those subjects, and it will improve only. Okay, so it will just improve, and that is what is the training with the questions. When you're solving with MCQs, it will only test how you're applying it, and it will train you to apply those concepts. So you may not get it immediately, but you're actually going through the training process where you will analyze your subject and do MCQs. That's the reason it is very important to
keep that balance between your notes revision and your MCQ practice. Only sticking to notes, only sticking to MCQs may not help. Do your notes and do your MCQs 30% of your day. Try to solve MCQs so that whatever you have studied, are you applying it or not, or are you just studying? Okay, so that thing will be there. And even if you're not able to do, it's just the training that is needed. That is what you want. That where you are missing out, where you are, trying to not apply, you will think over the options given, you think over the explanations given, and then understand, okay, where you are thinking was, improved, and where you are going wrong, right? It will help you in that way. So balance those two things, it will help you. एंग्जाइटी को कैसे कम करें? टू मच फियर इज नॉट नीडेड. मैं आपको बोलता हूँ, इतने सारे बैचेस हम करते हैं, राइट? एफएमजी के एग्जाम में hardly it was, previously it was much difficult papers, much less pass percentage, 9%, 10% like that. But now the percentage is improved. और इतना कम परसेंटेज में भी ऐसा नहीं है कि भी कोई बैच के बच्चे पास ही नहीं हुए. ऐसा नहीं हुआ कि 2012 के पूरा बैच का बैच पास नहीं हुआ कोई भी यूनिवर्सिटी का. Everybody has passed the exam. Everybody of you will also pass the exam. The timing may be different. Somebody must have passed in the first attempt, somebody may have passed in the second attempt, but it is not a exam where you have to too much of, panic, too much of anxiety and stuff. तो पहले ये दिमाग में रखो कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई somebody who has deviated from the path, somebody who has gone into some other stream, that is different. But somebody who is working hard to achieve this exam has already achieved the exam. I've seen very students who have never studied coming back and putting their heart and soul and getting good scores. So first of all, remove that unnecessary fear that this exam will not be done or इसमें क्या हो जाए. कुछ नहीं होगा, right? Exams आते रहेंगे, आप, it is not going to affect too much as we think. In the long run, everything will be, immaterial. तो ऐसा नहीं होगा कि भाई पूरा चीज इस पे बेस्ड है. इतना एंग्जाइटी और फियर नेसेसरी नहीं है. इतनी एंग्जाइटी रखो कि आप प्रेशर से आप पढ़ सकते हो, बट इतना नहीं है कि भाई आप इट बिकम्स अ डिसएडवांटेज फॉर यू. एंड sir, those who are stuck in 140s, the problem with 140s, I'll tell you, is you have to be very honest to yourself. होता क्या है ना, 140s आ गए तो हमको लगता है कि we know the subject, we know, and we don't give our 100% attempt or sincere attempt. The people who are stuck between 140 to 149, first, please think that you are starting from zero. Accept it. You accept it. Do not think that you know something and already, you try to work on that. It's not about 9 marks, 10 marks. It is about starting from the beginning. The first thing is, एक अपने आप से एक वो करो कि भी चलो मेरे को एक सिंसियर अटेम्प्ट एज इफ आई एम गिविंग एज द फर्स्ट अटेम्प्ट. द रीजन वी हैव दैट थिंग इज, हम लोग वही मिस्टेक रिपीटेडली करते हैं. जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स लास्ट टाइम होते हैं, इसी बार भी वीक सब्जेक्ट, लास्ट टाइम हमने 14-15 सब्जेक्ट किया हुआ होता है, इस बार भी हमने 14-15. वी आर नेवर डूइंग दैट 19 सब्जेक्ट्स, वी आर नेवर कंप्लीटिंग द टारगेट दैट इज नीडेड. अगेन एंड अगेन वी एंटर द एग्जाम विद द सेम काइंड ऑफ प्रिपरेशन. डू नॉट डू दैट. सिंसियरली स्टार्ट करो. यू आर द मोस्ट एलिजिबल टू पास. A person who has got 140s, 145, 149s, and he's sitting in the exam, compared to new people who are coming and studying and trying to put in so much of efforts, आप लोग तो already इतना subject जानते हो, or you are the most eligible to pass the exam. Right? Have that lead advantage with you, right? Have that acceptance with you कि भी हो सकता है, I am the most eligible among the crowd. मैं अगर sincerely ये 45 days करूंगा और with honesty करूंगा, self honesty से, right? Rather than कि मेरे को अभी वो होता है ना, एक अलग एक टैग आ जाता है तो कि 140 आ गया तो लगता है कि भी हमको आता है. नहीं, कुछ नहीं आता. शुरू से करेंगे, 45 days सिंसियरली करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स से. इस बार 150 का टारगेट नहीं रहेगा. People who are between 140s to 149s, this time your target should be much higher. 200 प्लस लाने की चांसेस है आप लोग को, राइट? एंड यू विल हैव अ मच बेटर इंटर्नशिप, मच बेटर कॉन्फिडेंस गोइंग फॉरवर्ड. इतना सारा सब्जेक्ट रिवाइज भी करे हो आप लोग, तो यू शुड एम मच हायर. यू आर द मोस्ट एलिजिबल टू गेट. गो विद दैट पॉजिटिविटी, अच्छा होगा. How to link things in question, that is going by your, if you understand different subjects, right, and then you try to apply it, it will be better. And subject wise से ज़्यादा अगर आप वो system wise approach देखोगे, अगर कोई question का link समझ नहीं आ रहा है, he has given you maybe psoriasis and asking you on orthopedics of psoriatic arthritis, you understand how he has given you the skin lesions, how is he going towards the radiograph, and how is he asking you about the orthopedic management of that and all. So वो सारा you understand the flow of the things by integrating the different subjects. So it is not going, medicine is not like just के एक ही तरीके का रहेगा. Skin lesion, dermatology का psoriasis देगा, एक्सरे देगा हैंड का showing that penicillin cup deformity, right? Treatment पूछेगा या फिर he'll ask you something else. So you have to understand how to integrate all of that, right? Sticking to your plan is important. Discipline अगर नहीं है, right, तो मुश्किल है.
अगर वो एक चीज ना, वन थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज डिसिप्लिन. आपको पसंद है नहीं पसंद है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन. मेक योर ब्रेन लिसन टू यू rather than you listening to your brain, right? Make your brain listen. It will tell, okay, now we'll rest, now we'll study there, now we'll go to this, now we'll do this, now it'll keep jumping, right? It is important that you make your brain listen to what is needed. It will say, okay, 3 hours you study, it will want to jump to some other topic. It will say, no, no, this will no, will not do our notes. We'll do some, some PDF of 2 pages, 3 pages that will complete the entire subject. 30 minutes, 20 minutes, the subject will be over. Okay, our mind jumps like that, and it does not give you results. You have to control your mind. You know what is needed, what is not needed, what works for you. इतना टाइम हो गया अभी. You know what works for you. MCQs कैसे सॉल्व होते हैं आपको पता है, राइट? उस पर थोड़ा मेहनत लगेगा. Don't look for easy way out. Go through the difficult part. But if the training is difficult, the result will be, the exam day will be easier, right? So, and you'll have a positive result. So go through that difficult process. Make your mind listen to you rather than you listening to your mind. Then I feel very sleepy. Decrease your mobile use if you are sleepy, and see that you sleep on time and wake up on time. Clock quality 6 to 7 hours if you are giving, right? थोड़ा early सो के देखो आप और fresh feel करोगे. If you are very sleepy, if you are not sleeping properly, होता क्या है ना, हम late night तक सोते हैं, फिर early morning जगते हैं, नींद भी आ रही है तो उठ जाते हैं, क्योंकि just we'll feel guilty, but that will not help. Throughout the day अपनी energy कम रहेगी. तो proper sleep, थोड़ा सा 11 बजे सो के आप 6 बजे उठ के देखो, अगर आपको उससे fresh feel हो रहा है, you should follow that up. Sir, we should revise single subject a day or 2 to 3 subjects. I feel 2 subjects is fine. More than 2 subjects nahi. Agar aap keep a major day, major time for the major subject. Like for example, I'm doing 9 o'clock to 6 o'clock or 7 o'clock one major subject. Maybe I'm doing OBG. In the evening, I would want to do a short subject or a easier version, a light MCQs or stuff like that. Okay, so just divide it into 2 parts. That is more yielding rather than doing only one subject or doing too many subjects together. So keep divide it into a major block and a minor block. मेजर ब्लॉक में आपका जो मेजर टारगेट है वो कंप्लीट करो. माइनर पार्ट में कोई एक छोटा माइनर सब्जेक्ट है या जो रिवीजन आपको करना है वो कर सकते हो. Safe score in GTs, it depends. Anywhere you're getting between 50%, I think 45 to 50%, you will get good in the day of exam, because GTs are more difficult, right? Whatever GTs you're writing, right, they are generally on the difficult end, but the examination is on the easier side. So don't compare your GT score to be exactly that same thing. Agar aapko you try to reach 45 to 50% on your GTs, and that should be a good score to do well on the day of exam. How many GTs will be enough before the exam? At least 5 to 6 GTs. Okay, minimum 5 to 6 GTs should be done. If you have already started, well and good. If not, it is high time now that you start. Okay, please do it. Complete your subjects first, and just start doing GTs. Even if you have, because anyways you have read the subjects, 19 subjects, एक बार तो करे हो, एक बार तो आपने MCQs किया होगा, subject किया होगा. It's not new for you now. So you can definitely do GTs at this point of time every week, and at least 5 to 6 GTs, try to complete them. Real FA, what should be the at least score in GTs that we need to feel safe in our preparation? I think 140 plus in your GTs, you are doing good on your preparation. Always try to score higher, but if you're getting 140s, right, I think you are on the safe zone. Okay, have trust and keep working, you will improve your scores only. Sir, recently joined 7 to 10 TND PYQ is enough for the exam, or when to solve PYQs? Nice, Dipanshu, and I hope you'll enjoy the session also. And when to solve PYQs, I mean about time. PYQs, generally they say because the exam is in the morning, you want to do the MCQs in the morning. You can try that thing if it keeps you active between 9 o'clock. But I would suggest any time is okay. Okay, what they say is generally if you are solving MCQs in the morning exam time, you will be solving it better, but it need not be that. Solve MCQs when you are really on the lower side of your energy. When you want to focus on your notes when you are in full energy. Focus on your MCQs when your energy is slightly less. Try to, so because that will keep you active, that will keep you more easy to complete the subject. You will use your time more effectively when you're solving MCQs when your energy is slightly less. When you're completely out of your energy, आपको लग रहा है कि और पढ़ा नहीं जा रहा है और लाइब्रेरी में बैठा नहीं जा रहा है, तब कोई वीडियो वॉच कर रहे हो या यूट्यूब सेशन देख रहे हो, कोई भी देख रहे हो, तो फैकल्टी विल हेल्प यू कंप्लीट मोर. But do not watch these things at your peak of your energy.
At your peak of your energy, stick to your notes, stick to you solving MCQs. Last should be when you're completely drained, when you cannot put your effort, because this is a passive method of watching the videos and trying to learn, is a more passive method. So you can use it when you're completely, not in that mood to, study anymore. That time you can, watch this thing. So decide it like that. Intense preparation with your notes when you're full on energy. MCQs when you're little exhausted, when you feel you can't do your intense study, MCQ solve करो, it will ease out your pressure. आप थोड़ा टाइम भी निकाल सकते हो, सब्जेक्ट भी होते रहेगा, अच्छा फील भी होते रहेगा, पॉजिटिव भी फील होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आते रहेगा. कभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, कभी भी थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, MCQs लेके करो, आपको यू विल स्टार्ट रिगेनिंग योर कॉन्फिडेंस. एंड completely when you are completely drained, you can use your videos to complete. Then 170 plus, which equals to 65% in all grand test. Yes. Sir, can we pass with 6 years PYQs of FMGs and 5 years of NEET PG? If they give you questions like last year, you can hope that you will clear, but still थोड़ा बहुत topic wise MCQs करना है. Depending purely on PYQs is taking to take a risk, because the questions are not exactly repeated. The topics are repeated, but not the exact frame or exact language of the question. So if the examiner slightly changes the question also, you will get into trouble. So always go for previous year topics. If you are doing a PYQ approach, look at the question, look at the options, try to understand those options properly. Try to understand whatever is relevant of those options properly. Don't just go with the question, answer हो गया, इसका ये answer हो गया बोल के नहीं जाना है. थोड़ा सा उस topic को समझने की कोशिश करो. At least the topics कर लो आप. Then you will have a doable exam. Then is 3000 PYQs of last 12 exams and 1000 NEET PG PYQs with explanation enough? Yes, that will give you a lot of confidence. It gives you a lot of benefit, right? Lekin only PYQs I am not supportive of. Only PYQs I am not supportive of. Topic wise MCQs करने का time है अभी आपके पास. You have time to complete chapter wise MCQs at this point of time. Why to just stick to PYQs? PYQs last 10 days में हो जाएंगे. 3000 MCQs आप बोल रहे हो, अगर आप दिन के 300 MCQs कर रहे हो, तो in 10 days you will finish 3000 MCQs. What will you do the rest of the days? So it is still possible to do topic wise MCQs. Try to do it, okay? At least for the subjects that you are not doing thoroughly with notes, try to do topic wise, chapter wise MCQs. हो जाएगा. Trust me on that. Try for 1 or 2 subjects, complete होगा, and you will feel much confident of that subject. Then in FMG only do images or theory also? Radiology is a more integrated subject. उसमें क्या होगा ना, आपको the questions will be integrated. When you're studying radiology, you are studying at least 3 to 4 subjects of, at least 30% of your clinical subjects are studying when you're studying radiology. Keep this in mind. So when you're studying a question on, renal tuberculosis, right? It can be a surgery question. Ankylosing spondylitis can be an orthopedics question. So when you're doing radiology, even if it is not a short subject. The problem is we think radiology is a short subject. We want it to be over in 2 hours. We want it to be over in 3 hours. It won't give you that results. It is actually 30% of your clinical subjects are touched in that. So you want to give it the due importance. Maybe 1.5 day, 2 days, and not much of your basic modalities. There are not lot of questions that are being asked. Nowadays, the radiology questions are all clinical questions that are being asked. Rather than spending a lot of time on physics of MRI or physics of, how the CT scan, types of CT scans, your approach should be looking at radiological anatomy, radiological, images that are there, and try to understand and correlate it with the other clinical subjects. Systemic radiology is more important. If you ask me, sir, I have not done radiology, how should I approach? More than your general radiology. General radiology, I mean X-rays, the CT scan, ultrasound, MRI, that is needed to understand the images and stuff. But at this point of time, give more importance to your systemic radiology, your respiratory radiology, GI radiology, genitourinary, CNS, right? So give more importance to this, women imaging, obstetric and gynec imaging. So this will give you a lot of score, and it will also ease out your clinical subject preparation. Then is getting a complete grip in theory more important or MCQ solving? Because now it's high time, which is best option. I've told you, right? Divide it. I've told you that thing. Divide whichever subjects you are better, and whichever subjects you are not better. So whichever subjects you are better, it is possible. जो आपने notes कर लिया है, whichever notes you have already done, stick to your notes. Do not change your source. Do not look for easy way. Stick to your notes. It will take maybe 2 to 3 hours more, but the kind of preparation, the kind of result it will give you is more. The subjects that you are not comfortable, yes, you can go for a retrograde and you will still get a good score. I got 148 in last exam. Could you suggest me to increase the score? Now 148 in the last exam, it must have been your, your
exam anxiety that day. So the couple of marks will not define who you will be on. It will not be again and again. So just see that you practice more exams before net practice before you go for your finals. More net practice. If you're getting consistently good scores in your GT, obviously on the day of exam also you'll get a good score. So the way to do that is because you know the knowledge now. You have the knowledge, you revise like what I have told you, keep revising your subjects, but increase your GTs, increase your MCQs. That will help you improve your score also. It's just about more net practice and you'll do well on the day of exam. And how to come from anxiety. Please, that is what I'm telling you, right? Everybody has passed the exam. हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा सब बुरा ही होगा सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते नहीं. I've seen people pass out from, you know, with consistent efforts, and this exam is not something that will be and that is that difficult now. आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, सिंगल वन लाइनर क्वेश्चंस है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, राइट? आप लोग भी जब मानते हो नहीं मानते हो कि भाई पेपर डुएबल था, राइट? 35% मतलब यू नो फर्स्ट टाइम 200 प्लस के इतने सारे मार्क्स आना, तो इट्स अ डुएबल पेपर. तो अननेसेसरी आप वो 40-50 डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सोचते 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 अपना दिमाग खराब करोगे. व्हाट यू फीड यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट वे. आपका थॉट्स पॉजिटिव रहना चाहिए. I am going to get good scores, I am going to do this exam well, I will be happy with my efforts. That thought should be there. If you start thinking negative from this point of time, it will create a vicious cycle of anxiety, nervousness. आप ना तो पढ़ पाओगे अच्छे से, ना तो सो पाओगे अच्छे से, और आप disappointed रहोगे. बट इंस्टेड इफ यू एक्चुअली फीड योर सेल्फ पॉजिटिव कि भाई मेरा अच्छा एग्जाम होगा, मेरा रिवीजन कंप्लीट होगा, मेरा 19 सब्जेक्ट्स होगा, मैं एग्जाम में कॉन्फिडेंटली हैप्पीली जाऊंगा. भाई अपने आप से मेहनत जितना अगर आप कर सकते हो तो और किस बात का परेशानी, किस बात की एंग्जाइटी. यू हैव डन हॉनेस्ट वर्क फ्रॉम योर सेल्फ. होप के पहले चीज को करो कि मेरा रिवीजन हो रहा है, मेरे 19 सब्जेक्ट्स मेरे को करना है, मेरा टारगेट और कुछ नहीं है. आई एम ओनली थिंकिंग ऑफ टुडे कि भाई आज मैंने 24 घंटे अच्छे से यूज किए नहीं किए, जैसा मेरा प्लान था वैसा मेरा किया. ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 19-20 होते रहेगा, बट डजंट मीन दैट यू नो लेट नेगेटिविटी क्रीप इन. Always feed positive thoughts to yourself, always feed positive, talk positive about your results, and positive actions will happen and positive results will come. The moment you start thinking about कि नहीं होगा एग्जाम, कैसा होगा एग्जाम, ये होगा वो 50-60 क्वेश्चन के पीछे 250 क्वेश्चन खराब मत कर लो, राइट? सो ऑलवेज फीड पॉजिटिविटी from your thought process. It will help you. PYQ's video format is okay, or we have to read. I prefer books, right? I am a very person who prefers books. आप books करो. Video solutions, I told you, when you are completely exhausted, when you cannot put that kind of energy, you can watch videos. But बुक्स से लेके एमसीक्यूज करते रहोगे तो एक कंप्लीशन रहेगा, आप मार्क कर लोगे कहाँ पे आपको वापस देखना है. इट विल गिव यू मोर एक्सेस, राइट? सो आई वुड प्रेफर दैट. Then how many hours should we study? I mean, as much as you feel energetic to study. Do not compromise on at least 6 to 8 hours of sleep, right? Minimum 6 to 8 hours of sleep is needed. Compromising sleep करके नहीं करना है. बाकी का टाइम आप जितना आप पढ़ सकते हो, कीप योर सेल्फ ऑन फोकस ऑन दैट थिंग. अब अभी तो सिर्फ 45 डेज है, 45 डेज आंख बंद करके कमिटेड काम करेंगे, राइट? रेस्ट पूरा इंटर्नशिप में तो आराम से ब्लड बैंक के पास थोड़े से इंटर्नशिप्स के टाइम 1-2-3 पोस्टिंग्स डिफिकल्ट होते हैं, बाकी के पोस्टिंग्स यू विल बी मच रिलैक्स, यू विल बी हैप्पी ऑल्सो, राइट? तो वो टाइम आएगा जब व्हेन यू आर गोइंग टू से दैट डायलॉग, राइट? तो वो टाइम आएगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत लग रही है, तो वेल एंड गुड. सो कीप वर्किंग अंटिल वन डे यू कैन से स्कैल्पल पीस. तो वो चीज के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा एफर्ट लग रहा है, तो क्या बात है, राइट? विल बी हैप्पी टू डू दैट, राइट? सो नो, नॉट एन इश्यू. एंड I hope this session helps you stay committed. I'll come back in the last 1 week or the last few days before your exam, and we'll see that you are all well prepared for your day of exam. So stay positive, stay blessed, stay happy, and we are all looking for positive results. And I'm sure with this extended preparation time that you have got, and with the kind of energy and efforts that you're keeping, all of you will do well. And my best wishes, and the entire team wishes you a very, very successful attempt this time, and we'll be happy to hear from all of you. And I hope you're all liking all the efforts that are being kept on this channel to to ease out your preparation, right? So I hope this session was useful. Stay blessed, guys. Okay, thank you so much. To come and see and check up on yourself. Okay, तो क्या अगर आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो मैं 25 days 10 days का जो टाइम दिया हूँ, I'll see if I can come and check on whether you're doing well on track. Okay, चलो, take care guys.